Yes, Shivam, I'm audible to you. Yes, sir. The last day we have discussed chemical kinetics. Yes, chemical kinetics last topic is Collision theory. collision theory. Then let me start basic introduce yourself. Hello, myself Sumedho. I'm from Varanasi. I have done my 10th and 12th from Ajay Singh Academy, and I have completed my B.Sc from Banaras Hindu Universities, and I have completed my M.Sc from IIT-Bombay. Yes, good. Your interview date is 9 or 10? Nine, nine. 9. General OBC 9. Yes, no, I think. Or category candidate, other one is 10, 11. कैटेगरी वाइज डिसाइड होता है क्या? डेट? हाँ, यस यस, 9 को जनरल वालों का, 11 को SC ST वालों का, क्योंकि जो मेरे कैंडिडेट हैं कैटेगरी के उनका डेट 11 को ही है। ऐसा ही होता है। तो ओबीसी के कितने लोग हैं? क्यों मेरे पास यस। ओबीसी के कितने होंगे? एक तो है सौरभ वंशिक है और एक आप है। लिस्ट देखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि पता नहीं चलता ना किसकी क्या कैटेगरी है। जो लोग बता देता है उसका तो पता चल जाता है मुझे। मैंने एक उसको पूछा था जिसका आपने नंबर भेजा था, तो उन्होंने कहा कि मैं चेंज कर रहा हूँ। यस, किसका भेजा था मैंने आपको? आपने ग्रुप में जब उस टाइम फॉर्म भरना था, उस टाइम किसी का नंबर भेजा था, तो मैंने पूछा तो बोले थे कि वो मैं चेंज कर रहा हूँ, जनरल में कर रहा हूँ। क्या नाम था उसका? वन में सागर। सागर क्या? भौमिक एक सागर अंदाज है, दो है ना सागर। और सर, पता नहीं सर, आपने नंबर भेजा था, सागर बस उस पे भौमिक का सागर भेजा ही होगा। लिखा है। तो वो जनरल में डाल दिया, वैसे तो ओबीसी में देता था, अब उसने जनरल कन्वर्ट कर दिया। तो क्रीमिलियर वो होगा ना। तो मुझे नहीं पता। मैंने मैंने उस टाइम पूछा था कि आपने भरा है कि नहीं जनरल में, तो ओबीसी में तो बोला था कि नहीं, शायद मैं जनरल में भरूंगा, कंफर्म नहीं मुझे। ऐसे कैसे भर दोगे यार, जब आपने प्री मेन से ओबीसी से निकाला है, और ये डीएफ जनरल में कैसे अप्लाई कर सकते हो? तो फॉर्म आया था ना, तो फॉर्म के हिसाब से जो जिसका सैलरी 8.5 से ऊपर होगी तो उन्हें जनरली कंसिडर किया जाएगा। हाँ, वो चेंज तो कर सकते हैं, इंटरव्यू में तो चेंज हो सकता है, लेकिन अब जिसका प्री और मेन से निकल गया है उसको तो प्रॉब्लम आई ना फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि अभी क्या डाटा है, किस हिसाब हाँ। से निकला है, बाद में प्रॉब्लम आएगी ना। तो एक तो रमनीत कौर है, एक आप है, एक वो सागर भौमिक था ओबीसी में। और ये चंदन कुमार घोष है, ये तो जनरल में है, ये जाना ये भी है तो कैटेगरी। ओबीसी वालों का तो फर्स्ट डे ही होगा, 9 को ही होगा सबका। हाँ, फिर तो 9 को ही होगा सबका। सबका 9 को होगा या फिर 10 को भी होगा किसी का। तो कैंडिडेट के ऊपर है ना। कैंडिडेट टोटल 35 निकाली थी, लेकिन वो एक कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिया था उसका डॉक्यूमेंट, लेकिन उसने क्लेम कर दिया तो उसका एक्सेप्ट कर लिया, तो 36 हो गए ना। पहले 39 लिख लिए थे, फिर रिजेक्ट करके जब लिस्ट आई थी तो यस सर। 35 कर दिए। लेकिन एक कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए अपने यहीं से ही है, क्या नाम है उसका, पाल मंडल, सुब्रता मंडल। तो उसने दोबारा डॉक्यूमेंट लगा दिए, तो वो SC में थे तो उनको सबमिट हो गया, एक्सेप्ट कर लिया है। तो 36 हो गए, मतलब 15 वैकेंसी में 36 कैंडिडेट है। तो SC की 2 वैकेंसी है, 2 में 4 लोग हैं।
दो में सिर्फ चार ही लोग हैं। अब आप देख लीजिए कंपटीशन कितना कम हो गया। तो ओबीसी की टोटल वैकेंसी कितनी है? तीन है ना? तो चार है। चार है। चार है ना? तो चार है तो चार पे आठ लोग होंगे, नाइन होंगे समथिंग। कंपटीशन कम ही है। तो 12 लोग को अगर तो 12 लोग को तो इनवाइट किया गया होगा। 12 कॉल किए ओबीसी के। हाँ सर, 10 या 12 को किया गया होगा। 10 किए गए हो, 10, 12 नहीं होंगे। 12 तो 3 गुना हो गया ना, टोटल वैकेंसी 3 गुना है ही नहीं। 10 होंगी मुश्किल से, या 9 होंगे या 10 यस। होंगे। चार वैकेंसी पे मेरे हिसाब से 10 होगा। 10 ही होगा। लेकिन ये वो एससी में 5 लोगों को किया था। दो वैकेंसी पे, पांच पे था। तो एक का डॉक्यूमेंट, दो के रिजेक्ट किए थे तो एक का एक्सेप्ट कर लिया, तो चार ही रह गए, एक तो रिजेक्ट हो गया। तो चार कैंडिडेट ही हैं, तो कितना कंपटीशन हो गया? 50% ही हो गया। अब जिसका इंटरव्यू सही दोगे तो उस हिसाब से, अब जिसके रिटर्न में, प्री में, मेंस में तीनों जुड़ता है ना, मार्क्स अच्छे होंगे तो ये। जीएसआई में अब थोड़ा वैसा हो गया है, अगर बंदा निकल जाता है, मेंस निकाल देता है, इंटरव्यू थोड़ा अच्छी तरह से कर लो आप, तो हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेंस तक प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है मेंस तक। बस कोई नहीं, आप तैयारी, आपने बहुत मेहनत की है, हम बिल्कुल। लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं, बस आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना, आपकी थोड़ा जीएस में और ले लो दो तीन मॉक, है ना? तो टाइम निकाल के आप कैसे भी करके मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनके ऊपर, जिससे क्या मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि, और आपको भी दिक्कत नहीं होगी ना, क्योंकि इतनी की है मेहनत, दो तीन तो मॉक जीएस कल पर। एक कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, जो आपने पूरा लिस्ट बनवाया था उसके हाँ हिसाब से। हाँ, वो अभी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनल मॉक लूंगा मैं। यस, क्या कॉलिजन केमिस्ट्री मतलब थ्योरी हमने डिस्कस की थी लास्ट डे, इस कंप्लीट हो गई थी कि स्टार्टिंग किया था? कंप्लीट हो गई तो ड्रॉबैक बचा। यस, ड्रॉबैक लिमिटेशन क्या है कॉलिजन थ्योरी के? Drawback collision theory, sir, it does not consider the rotational and vibrational degree of freedom. We totally ignore that and consider only translational degree of freedom. And and the value of rho vary from 1 to 10 to the power 9, but he considers as constant. And he does not give any relation with orientation factor and the structure of the molecule. And theory will be applicable for the simple gaseous molecule. If the complex molecule are there, then it is not applicable. यस, नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। यस, गुड। नेक्स्ट वन इज टाइसन स्टेट थ्योरी। व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ टाइसन स्टेट थ्योरी? The transition state theory is used to explain the simple reaction as well as a complex reaction, also to describe the how the reactions are going and their reactivity. It also it also explain the different chemical reaction. It also give explanation about the rate, interpreting the rate data. यस, गुड। टाइसन स्टेट थ्योरी। यस, टाइसन स्टेट, व्हाट द फॉर्मूला ऑफ टाइसन स्टेट थ्योरी? फाइनल फॉर्मूला के बराबर क्या होता है? Uh, K is equal to KBT by H, e के power delta S by R, and e के power 1 minus delta NG, and e के power minus EA by RT. यस, टाइसन स्टेट थ्योरी, फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एक्टिवेशन एंड स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ एक्टिवेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेशन, ये जो डिफरेंस क्या है? एक बार रिपीट कर लेते हैं एक्टिवेशन व्हाट द एनर्जी। डिफरेंस बिटवीन डेल जी स्टैंडर्ड एंड डेल एस डेल एच एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी, इसमें डिफरेंस क्या है?
नहीं नहीं पता। जो के वैल्यू है ये ट्रांजिशन कॉफिशिएंट है। क्या है ट्रांजिशन कॉफिशिएंट? यस। क्या है इसका मेन पर्पज क्या है? ट्रांजिशन कॉफिशिएंट इन ट्रांजिशन स्ट्रक्चर। ट्रांजिशन कोफिशिएंट। यस, के किसके क्या फाइंड करता है? डिटेल आपने ये बताया है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में के क्या निकालता है, वही चीज है के ट्रांजिशन कोएफिशिएंट के बराबर केवीटी अपॉन एच डॉट ई। के कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। यस, रेट कांस्टेंट ये सारी वैल्यू को फाइंड करता है ना के, एंट्रोपी एंथैल्पी इन सब को निकालता है ना के। यस। नेक्स्ट वन, केमिकल काइनेटिक ना रिलेशन है जो अभी आपने हमने पढ़ चुके हैं। द रिलेशन बिटवीन एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एंड टेम्परेचर। यस। सर प्लीज रिपीट द यस, क्वेश्चन। relation between activation energy, enthalpy of activation and temperature. सर एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी माइनस वन बाई आर वन आर टी। यस, रिलेशन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए बताइए क्या फॉर्मूला आएगा? सर फॉर एनी मॉलिक्यूलर के लिए ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस आर टी। एंड फॉर बायो मॉलिक्यूलर्स के लिए ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टू आर टी। एंड फॉर थर्ड ऑर्डर इज थ्री आर टी। यस, फर्स्ट ऑर्डर है एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू डेल एच प्लस आर टी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर प्लस टू आर टी, थर्ड ऑर्डर थ्री आर टी इज द रिलेशन बिटवीन। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट इफेक्ट। व्हाट इज सॉल्ट इफेक्ट इन केमिकल काइनेटिक? The salt effect is basically give the relation between the electrolytic concentration and on activity coefficient with the rate of reaction. सॉल्ट इफेक्ट में हम क्या डिस्कस करते हैं? व्हाट द मेन पर्पज ऑफ सॉल्ट इफेक्ट इन केमिकल काइनेटिक? So salt effect ionic reaction को हमें explain करता है. It explain the rate of ionic reaction in different form of non-ionic reaction. यस, आयनिक नॉन आयनिक रिएक्शन। यस, जो हम डिस्कस करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। यस, आयनिक इक्विलिब्रियम, Yes. डिवाइल इक्वल लिमिटिंग लॉ, इलेक्ट्रोलाइट, आयनिक स्ट्रेंथ। यस,
Yes. The next one is what the difference between fast reaction and slow reaction. The fast reaction, the reaction in which is happening in very low time, very less time. It can be immediate or it can be in nanosecond, nanosecond or in picosecond are the fast reaction, and the slow reaction are the reaction which is happening more than a month, a year. That is a slow reaction. This what is chain reaction and how many type of chain reaction? The chain reaction are the reaction which is happen by itself, which does not require any external medium to propagate further. There are different types of chain reaction: radical chain reaction, cationic chain reaction, anionic chain reaction, and radical chain reaction. ये चेन रिएक्शन ही नॉर्मल चेन रिएक्शन ब्रांच चेन रिएक्शन इनमें क्या डिफरेंस है? The normal chain reaction are the reaction which increase its length, which increases length, or which react in one direction, in only one direction, in it is one axis reaction. And the branch reaction are the reaction which is happening in multiple directions, which have multiple products. Next one is parallel and conjugative reaction. What the difference? So conjugative reaction are the reaction which is happening in two steps. There is a reaction which happen one step and further goes further next step. But parallel reaction are the reaction in which the two different products are formed from the one reactant. And in chain in Yeah, last two question. What the main beneficial point of whole chemical kinetics in our society human being? Any 4 5 point? benefits. So there are lots of benefit in real life of the kinetics. We have to see the many reactions. Uh, uh, like we have to study the kinetics of photosynthesis, which help us to grow the best food in a certain time. And preserving food is also beneficial to by study the chemical kinetics. It helps us to know about the how to prevent the food, and it also helps us to understand the speeding of the chemical reactions. It is also beneficial for the different industrial process reactions. It gives information to how to make the reaction faster and which type of which type of reaction are beneficial for the industrial industry. And whole chemical kinetics in drawback limitation.
The drawback is that we cannot study the fast reactions. Reaction which is very fast is not able to study by the chemical kinetics. We can also not study the reaction which is very slow, which takes a very long time to complete. Yes. नेक्स्ट न्यू टॉपिक, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस। Yes, sir. The electrochemistry will start. इलेक्ट्रो बचा है, इलेक्ट्रो फिर कंडक्टेंस भी होगा। यस, इलेक्ट्रो कंडक्टेंस सरफेस फेस तो है नहीं ये सिलेबस में, सरफेस है ना, क्वांटम बेसिक 1D वगैरह, क्योंकि बेसिक ही ये सिलेबस में। या लेट वी स्टार्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, व्हाट द मेन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। Electrochemistry have lots of application in different fields like energy storage and conservation. Like battery and fuel cells use electrochemical process to store and convert the energy, and it also help in medical treatment, different electrotherapies, and it is also useful for the industrial processes like electrophoresis, corrosion control, electrosynthesis, electroplating. यस, द बेसिक पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज electrochemical series. Yes, what the main application of electrochemical series? The electrochemical series, it gives information about the reaction feasibility, that a reaction is happen or not, and it also give information about the spontaneity of the reactions, and it also give information about the reactivity of the metals, how the which metal will react and which metal will not react, and it give information about which metal is most reducing agitator, which is most oxidizing in nature. What the difference between oxidation reduction? Oxidation is a process in which electron metal lose its electron, and reduction is a process in which metal gain the electron. Yes. Next one is the basic point is galvanic cell. Yes, what is galvanic cell? What the main application of galvanic cell in Gal- chemistry? Galvanic cell, it is a device which is in which which is used to convert the chemical energy into electrical energy, and it is used in making the batteries, fuel cell, and electroplating. Sometimes it is also used as for water treatment to control the water acidity.
Galvanic cell uses salt bridge. What is salt bridge? Which type of metal is used in salt bridge? What the function of salt bridge in galvanic cell and Daniel cell? Salt bridge is a U-type tube which is used to complete used to complete the reaction. There are lots of application of salt bridge, like it is used to maintain the electrical neutrality of the electrolytic solutions, and it's permit the transfer of ion in the respective electrolytic solutions. It maintains the current flow. It minimizes the effect of liquid junction potential. And the element used are uh, KCl, KNO3, and NH4NO3. Yes. Galvanic cell used in anode and cathode. Which metal used in anode and cathode condition? Galvanic cell, so Daniel cell या galvanic cell? Galvanic cell is सब नाम is Daniel cell. Same. So zinc, zinc, so zinc are oxidized, and copper is reduced. The oxidation of reaction are zinc to zinc 2 plus, and the reaction are Cu 2 plus gain 2 electrons and change into Cu solid. What's the difference between anode and cathode? So, anode, so where the reduction oxidation are happen are considered as a anode, and where the reduction are happen are considered as a cathode. Yes, good. Next is concentration cell. What is concentration cell? The concentration cells, cells are the cells which have same uh, which have equivalent same elements with different composition, with differing concentration terms. Yes, concentration cell is two type, electrode and electrolytic. What the difference? The electrode So electrode concentration cells are the cells in which they are same electrode are present but differ in different concentration of electrolyte, and the concentration and the second is in which the concentration is same, and they are differ in the electrode. They are different electrode are present. Yes, galvanic cell del G is always negative. Electrolytic cell del G is always positive. Why? What the reason? Galvanic cell. Galvanic cell del G value is always
Negative, and the electrolytic del G always is positive. Why? What the condition? Uh, the net E cell of the reaction, inert cell of the reaction should be positive for any reaction to be happen. And according to this, delta G is equal to minus NF inert cell. And if inert is positive, then delta G should be negative. To happen the particular electrochemical reaction, delta G should be negative for the electrochemical cell. Spontaneous and non-spontaneous condition. Yes. Next is Yes, sir. how many type of galvanic cell? Uh, Galvanic cell is three types: primary cell, secondary cell, and fuel cell. Primary cell it cannot be rechargeable, and rechargeable, and fuel cell is continuous source of the current. Primary cell example is dry cell, zinc mercury cell. Secondary cell is a lead yes, storage battery, nickel cadmium. Fuel cell is H2O2 cell. The next one is Nast equation. Okay, no problem. Look them. Next is Nast equation. What the main application of Nast equation in electrochemistry? so that situation is basically used to calculate the concentration of different ions present in the solution. It is also used to predict the cell what is the cell potential of the electrode, and it is also calculate. It is also used to predict the direction of the redox reaction, if it is spontaneous or not non-spontaneous, and it is also used to calculate the pH of the solutions. Yes, what the formula of Nast equation? The so E is equal to E naught minus 0.059 by n log of oxidized reduced form by oxidized form, product by. Yes, what the main application of Nast equation? Purpose in electrochemistry. So it is used to calculate the cell potential of the particular electrode. Like we have to calculate the individual cell. Then we have to connect with the hydrogen electrode, and we get
the cell potential of that using the Nernst equations. And we can also calculate this ion concentration of different ions. And we can also predict the direction of the redox reaction. Yes, how to determine the value is del G, del H, and del E from next equation. Uh, so, so delta S is equal to NF del E by del T at constant T. We can calculate delta S using NF del E by del T at constant T. And delta G is equal to delta S minus P delta S. And we can put the value of delta G minus NF E naught cell and delta S is equal to NF del E by del T at constant T. We get the value of delta S. Yes, how to determine the equivalent constant from next equation. Equivalent. Equilibrium constant. So equilibrium constant. At equilibrium constant, E cell is equal to, and then we can calculate using delta G is equal to NF E naught NF E naught cell and put the value of E naught in delta G value, and here we get the Yes, how to determine next equation. How to determine E cell value. E cell value हमने point out कर लिए. Del G हो गया, del G equilibrium हो गया. Solubility product. Last one is solubility product. What the formula of solubility product from a next equation? so solubility product. So then we have to write the particular reaction according to that. Then we have to calculate like E naught is equal to E naught is equal to 0 for the equilibrium, and here we get E is equal to 0 and E naught is equal to 0.059 by n log of KSP. pH. Determination of pH from next equation. So pH for the hydrogen, we can take example for hydrogen gas, and the pH we can calculate for the anode reaction that H2 is changed into hydrogen and electron, and we get E is equal to E naught minus 0.059 by n log of H plus n. And here from here we can get E value, and E naught is 0 for hydrogens, and we get E is equal to 0.059 into pH.